Okay, I guess internal energy वाला answer you all have written last time. ठीक है कि which are the ways by which internal energy of the system can be changed. Explain it with example. तो ये last time हो गया था. इसके there are two ways. या तो heat energy supply करो burner से directly, या तो फिर no heat energy supply करनी, just shift the piston, तो भी internal energy rise होती है. So this was the conclusion of answer कि thus internal energy of system can be changed in two different ways, by heating system or by doing work done. ठीक है, so this is what we did last time. इसके आगे we will see now full fledged derivation of proof of first law of thermodynamics. Okay, अच्छा, now this is what in this answer you will find. Textbook में अगर आप read करोगे तो initially also they have explained with two examples कि अगर if the work is done by system, तो whether it is positive negative work is done on system, तो क्या होगी, तो no need to write those two examples. Okay, directly I have made the answer such that कि आप directly first law of thermodynamics पे पहुंच जाओगे. Okay, so question is derive and define and derive first law of thermodynamics. Very important question. You can get it for 3 marks. ठीक है, in the textbook initially in this answer they have given two more examples, right? तो वो examples नहीं भी लिया तो भी चलेगा. And this is how I have done thermodynamics answer. So all of you note down question. Define and derive first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क. एग्जैक्टली, मैथमेटिकल रिलेशन, इक्वेशन बिटवीन हीट एंड work done means Q and W. So is there any relation between Q and W? Heat, Q is the amount of heat energy supplied, and work done we always denote by W. तो जब भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो देयर इज राइज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसके लिए यू भी आता है. सो देयर आर थ्री क्वांटिटीज, डब्ल्यू, क्यू एंड यू. बट बेसिकली ये रिलेशन किसके बीच में है? हीट एंड वर्क डन. ओके, सो ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस. Cylinder filled with some gas, ये cylinder है. In this cylinder some gas is filled. This cylinder is provided with movable and massless and frictionless piston at one end. यहाँ पे जो piston है it can be moved. cylinder की अंदर जो system है वो piston के ऊपर force exert कर रही है. Thus, because of the action of force, piston is shifted towards the right hand side. Yes, so it means the work is done by system here. वर्क कौन कर रहा है? जो अंदर की जो सिस्टम है वो वर्क कर रही है. पिस्टन को शिफ्ट करके ये डायरेक्शन में, एंड पिस्टन इज शिफ्टेड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. ओके, सो आर यू ऑल डन विद द राइटिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड? So that I will go for the next. Okay, I got message. Quickly write it down. Only 2 points are there. At least do tick mark in the textbook so that you can start preparing your answers. This is very important. Okay, I got message. Done. ठीक है नेहा. I got message. Done. Okay beta. Next. So let the cross-sectional area of the piston is A, BA, and the constant pressure exerted by the system on the piston is P. अंदर की जो system है वो piston के ऊपर force exert कर रही है. So force exerted का formula क्या आएगा? F is equal to P into A. बराबर, pressure is force upon area. So from which what will be the formula of force exerted here? Pressure into area. Okay, so total force exerted by the system on the piston will be F is equal to P into A. Say the piston
is move through very small distance dx, कि चलो पिस्टन को फर्दर और स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करना है. ओके, dx इज द स्मॉल डिस्टेंस फर्दर. सो द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? dw इज ऑलवेज f into dx. आई गॉट मैसेज. ओके, खुशी सेइंग कि डिराइव करने के टाइम पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो चलेगा. चलेगा बेटा, चलेगा. एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा तो चलेगा, बट राइट फ्यू पॉइंट्स. जैसे कि अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने कि बहुत लेंदी आंसर हो जाता तो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. ठीक है, तो फिर क्या करना है बेटा, आप ये सारे जो टर्म्स है ना उसका मीनिंग याद रखो. जैसे कि P इज द प्रेशर एक्सर्टेड. ओके, सो आप शॉर्ट में लिख सकते हो P. A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन. सो P is your pressure exerted. Then force exerted is P into A. So in short, you prepare better. I got message. Let me read it. Okay. Yes. So like that you should prepare. Further, say piston is moved through small distance dx. The work done is F into dx. Now substituting equation 1 in 2. So चलो F की value equation number 2 में, तो ये वाली value, yes, this value we will put in this equation. तो f की वैल्यू क्या है? p इंटू ए इंटू डी एक्स. ओके, f की वैल्यू है p इंटू ए. फोर द वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो p इंटू ए यहाँ पे डाल दिया हमने इक्वेशन 2 में. तो फिर आपको क्या करना है? एरिया a इंटू डी एक्स, ये जो प्रोडक्ट है यू विल राइट इन वन ब्रैकेट. क्यों? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें देगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो हमें dv की वैल्यू मिलेगी. यस. So abhi we will substitute dv in above equation. So all of you write down. Once you are done, please tell me. I got message. Done. Okay, beta. I got another message. Let me read it. Okay, Neha and Kavya is also saying done. Okay, so 3 students have told me they are done. Area into dx is further volume. अभी equation 3 में क्या बन जाएगा? dw is p into dv. Yes. So equation 3 देखो, dw क्या हो गया? p into dv. Volume हमने add कर दिया यहाँ पे p into dx की जगह पे, a into dx की जगह पे. अच्छा, अभी vi क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस. इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ द गैस था वो इतना था. ठीक है, बाद में गैस ने ही पिस्टन को शिफ्ट करके इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलो या फिर द सिस्टम विच इज इनसाइड द सिलेंडर बोलो वाज दिस मच. बाद में आफ्टर सम टाइम द सिस्टम ही अंदर से पिस्टन को पुश करती फाइनल वॉल्यूम इतना आ गया. सो कितना वर्क डन होगा? टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन के लिए वी विल इंटीग्रेट by giving limits. Lower limit will be from initial volume till final volume. Work done initial volume और final volume तक हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक हुआ है. इसके लिए लिमिट्स आए vi as a lower limit and vf as the upper limit. Okay, so by integrating above equation we get total work done. So w is nothing but integration of dw. So आप ऐसे भी लिख सकते हो w is integration of dw. W is nothing but integration of dw. By integrating all the small work done, we get total work done. And the limits are from vi to vf. P, here P is constant. Let us take it P outside. Okay. And vi2 because volume is changing here. Okay. So, and pressure is kept constant. So pressure, well, P is, I'm taking it outside, and integration of vi to vf into dv. Integration of dv. Integration of dv, you all know integration of dv आएगा only v. फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और लिमिट्स डालोगे आप. लोअर लिमिट एज vi and upper limit as vf.
And then what you have to do? Just substitute limits in place of V. So upper limit minus lower limit. All of you write down. Okay, I got message. Done? Okay, beta. See here. Thus, from the above observation, it is clear that internal energy of the system can be changed in the two ways. या तो फिर by providing some heat to the system, yes, ये हमने previous to previous आंसर में देखा, यही आंसर के previous वाले आंसर में देखा कि अगर या तो heat energy supply करो तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होती है, या तो फिर सिस्टम के ऊपर वर्क डन करो तो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होती है. जरूरी नहीं है कि हीट सप्लाई करनी है, राइट. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय द टू वेज. या तो एनर्जी सप्लाई करो, क्यू सप्लाई करो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1. डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 2. यस, अभी ये माइनस डब्ल्यू क्या है कि जब भी वर्क होगा, इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, yes, work is done on the system, then it is positive. If the work is done by the system, then उसकी खुद की ही internal energy decrease हो जाएगी, right? So that work done will be negative. Value of the internal energy will be negative. Vice versa. इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आया है, ठीक है. कि ये माइनस साइन क्यों आई है मैम? तो सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू. वेयर इज माय पेन? ओके, से फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ठीक है. यस, here is the piston. Okay, and say initially Q is supplied to system, heat energy supply किया. Okay, ठीक है. After some time then supply is removed. अच्छा, the temperature of the system which is inside this increases, rises. इसका internal energy rise होता है, ठीक है. But इसके बाद say the pressure of the system is expansion of the gas हो गया, तो pressure भी rise हो गया. तो फिर उसके बाद क्या होगा? अंदर की सिस्टम को अभी हम क्यू नहीं सप्लाई कर रहे, क्यू हैज बीन स्टॉप्ड, क्यू देना बंद कर दिया. तो अगर अंदर की सिस्टम ही अगर ये पिस्टन को शिफ्ट करे इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, इसका मतलब सिस्टम खुद से वर्क डन कर रही है. इन डूइंग सो इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी कम होगी, इसका खुद का इंटरनल एनर्जी कम होगा. डेल्टा यू विल डिक्रीज व्हेन देयर इज अ वर्क डन बाय सिस्टम on the surrounding. सिस्टम खुद वर्क डन कर रही है इन एक्सपांडिंग. यस, अंदर के सिस्टम का एक्सपांशन करने के लिए सिस्टम अंदर से वर्क डन कर रही है बाय पुशिंग द पिस्टन, राइट, एंड बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. पर इसमें इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है डेल्टा यू, वैल्यू इज डिक्रीजिंग बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. सो वाइज वर्सा, अगर उल्टा होता तो सराउंडिंग अगर वर्क डन करता तो सिस्टम के ऊपर, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती. सो वाइज वर्सा, ठीक है, वाइज वर्सा. ओके, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आया है. अगर सिस्टम ने खुद ने वर्क डन किया ऑन सराउंडिंग when there is no supply of heat energy also, तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, इसके लिए माइनस डब्ल्यू. पर अगर उसके हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी हीट सप्लाई सोर्स, राइट, तो उसकी इंटरनल एनर्जी राइज होगी, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव. इसके लिए वाइज है, इसके लिए यहाँ पे माइनस है, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस. तो देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लिखा है, बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय टेकिंग सम वर्क फ्रॉम सिस्टम. अगर सिस्टम से काम करवा रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी. बाय टेकिंग सम वर्क फ्रॉम सिस्टम मतलब सिस्टम से अगर वर्क डन करवा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज. सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. तो दैट्स व्हाई हियर इट इज माइनस साइन. तो चलो टोटल फाइंड आउट करना है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we will get total energy as Q minus W. Thus Q का फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा U plus W.
बोथ इक्वेशन 3 and 4 दोनों भी स्टार इक्वेशंस है. All of you write down. Both equations are the equations of first law of thermodynamics. दोनों भी first law of thermodynamics के equations. And this statement is the definition. This is definition. So let me write it as definition of first law of thermodynamics. Okay. So this is the definition of first law of thermodynamics. Are you all done with this? Are you all done with the writing part? Just tell me. Okay, I got message. Neha and Khushi, they are saying done. Okay, beta. Yes. Next questions. These are one first question, define system variable and give its example. It's a 2 marks question. खाली definition आएगा, define system variables, तो it is 1 mark question. नीचे वाला question भी, which are intensive and extensive variables, give their examples. क्योंकि यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा है, which are intensive and extensive variables along with the example. So it is 3 marks question. एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, which are intensive and extensive variable, 2 marks question. ऐसे भी आ सकता है, give examples of intensive and extensive variable, 2 marks question. ऐसे भी आ सकता है, which are intensive variable, 1 mark question. Give examples of only intensive variable, 1 mark question. खाली एक्सटेंसिव वेरिएबल के एग्जांपल दो, 1 मार्क क्वेश्चन. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के. ओके. सो डिफाइन सिस्टम वेरिएबल एंड गिव इट्स एग्जांपल. बेसिकली आपको लिखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो इट इज एनी मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. यस, ऐसी क्वांटिटी, ऐसे प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल है जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होती है, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल. सिंपल इज दैट. Pressure, volume, mass, density and temperature are some of the variables that are used to describe a system. Exactly. तो वैसे भी बोल सकते हो, variables are also used to describe a system. Okay, and they are measurable. Second question, which are intensive and extensive variables? Intensive variables do not depend on size of the system, and extensive variable depends on the size of the system. तो फिर देखो आगे एक एग्जांपल डिस्क्राइब किया, कंसीडर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, लेट द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, एक सिस्टम लो और फिर फर्दर उसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिस्टम, अ गैस इज फील्ड इन दिस सिस्टम व्हिच हैज मास, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी. पर फिर यहाँ पे ही 2 कंपार्टमेंट कर देना है. जैसे ही 2 कंपार्टमेंट करेंगे तो कौन कौन से वेरिएबल सेम रहेंगे, राइट. राइट. कौन कौन से वेरिएबल है जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे. एक ही कंपार्टमेंट था, अभी वो एक कंपार्टमेंट के मैंने 2 छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करके, आई हैव वन सिस्टम वाज होल, बट नाउ आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स. जब भी ये सिस्टम को, अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, राइट. अगर इसके 2 कंपार्टमेंट्स कर दूं तो कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो चेंज होगी और कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो सेम रहेगी. क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों साइज चेंज हो गया. देखो पहले एक बड़ा कंपार्टमेंट था, राइट, तो साइज वाज लार्ज. अभी 2 छोटे छोटे कंपार्टमेंट है तो साइज इज स्मॉल. तो कौन से क्वांटिटी साइज के हिसाब से सेम रहेंगे और चेंज हो जाएंगे. तो दे आर द एग्जांपल्स.
each with the half of the original volume. यहाँ पे pressure, density and temperature, density of material will not change. Compartment 2 बनाओ या 10 बनाओ, pressure जो वो system का जो pressure था inside, right? तो pressure is equally, pressure gets equally distributed. प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो सिस्टम का गैस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. इसके लिए प्रेशर सेम रहेगा. टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दिया हुआ है सिस्टम का अंदर का टेम्परेचर सेम रहेगा. अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता तो टेम्परेचर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट. तो वैसा नहीं. तो ये जो क्वांटिटीज है ये 3 क्वांटिटीज सेम रहेगी, राइट? ओके, सो दिस 3 क्वांटिटीज प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर सेम. तो ये कौन से वेरिएबल्स हो गए? इंटेंसिव. एंड कौन कौन से क्वांटिटीज के डिफरेंट होने के चांसेस है यहाँ पे? तो मास बराबर है, मास डिवाइड हो जाएगा. ओके, मास ऑफ द सैंपल ऑफ द गैस गेट्स डिवाइड इन 2 कंपार्टमेंट. आधा मास फर्स्ट कंपार्टमेंट में चली जाएगी, डिपेंड्स कि इक्वल, हाँ इक्वल वॉल्यूम के डिवाइड किए ना, तो हाफ ऑफ द मास गेट्स डिवाइडेड इनटू फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड हाफ मास गेट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड कंपार्टमेंट. एंड सिमिलरली इंटरनल एनर्जी इज आल्सो इक्वली डिवाइडेड. तो मास एंड इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गए और बाकी के 3 इंटेंसिव वेरिएबल्स हो गए. ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस? फिनिश राइटिंग. Okay, I got message. Okay, Kavya is saying done. आदित्य, आदित्य आपका वीडियो ऑन है बेटा. Okay, so everyone understood, I guess. Yes, all of you have understood. Okay, everyone have understood whatever I have taught. Yes. Okay, let me see. Okay, ठीक. So let us go further now. Let's go back to our pavilion. Okay, I got message. Yes. Okay, let's go back to pavilion. Let's go back to our textbook. Next time I will prepare it in the form of question answer. Few further more questions I will prepare it in the form of question answers. Okay. Remember कि thermodynamics अगर आप ऐसे question answer के form में learn करोगे, it is much better and easy to learn rather than learning lot of theory. It is easy and much better. Okay. So I guess we were on page number, yes, हम लोग 4.72 ये जो एग्जाम्पल था 4.72 हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे. Exactly. So let me take my pen from here. Yes. So we were discussing heat added during thermodynamics process. Interesting, very interesting. Very interesting example, right? 4.72. I guess you all have understood 4.72. I mean, we were on 4.72. Aditya, your camera is keeping on again and again. Sorry, ma'am. It's okay, beta.
4.71 हो गया था वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कि कौन कौन से डिफरेंट पाथ से वी कैन डू वर्क डन. ठीक है, पीएफ इज अ फाइनल प्रेशर, पीआई इज द इनिशियल प्रेशर. बहुत सारे पाथ हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. ए टू बी फर्स्ट पाथ, देन ए टू सी जा सकते हैं और फिर सी टू बी भी जा सकते हैं, राइट. ए से सी जा सकते हैं बाय चेंजिंग द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर सी से बी जाना है. फिर थर्ड पाथ ये भी देखा था, ए से डी जाओ बाय चेंजिंग द प्रेशर बट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, और फिर डी से बी जाओ, राइट. बट हर एक वर्क डन में इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम का जो इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम ही जाना है. द बेसिक आइडिया वाज सेम, ओनली द पाथ वर डिफरेंट. यस, the path along which the changes takes place were different. Okay, so three paths last time we learned. One was A to B directly through a curve, then A to C jao, C to B, then A to D, and then D to B. A to C जा रहे तो देखो pressure same है. Yes, pressure remains the same. Let me just show you graph. I am talking about graph. Okay, see here. ये ग्राफ में देखो, जब ए टू सी जाते हैं, राइट, तो पीआई लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो प्रेशर सेम है. एंड सी टू बी में और ए टू सी जाने के टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस पे, बट प्रेशर इज सेम. सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. फिर फाइनली सी से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम बट द प्रेशर डिक्रीजेस. तो वैसे भी हो सकते हैं चेंजेस. देन थर्ड पाथ है ए टू बी. ए टू बी पर पहले ए टू डी जाना है, राइट. सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग बट नीचे देखो वी आई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और फिर प्रेशर कांस्टेंट होगा एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज. ओके, तो ये तीनों पाथ आपको एक्सप्लेन करने थे अच्छे से. नाउ today we will continue with 4.72. last time I had given little idea. तो चलो आज डायरेक्टली डायग्राम्स ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये दो डायग्राम्स की क्या कंपैरिजन बताइए. 4.13a ये वाला डायग्राम, 4.13a, एंड ये पूरे आंसर में क्या है दैट आई विल टेल यू कि कंपैरिजन बिटवीन दिस टू डायग्राम्स दे हैव गिवन एंड फाइनल कंक्लूजन 4.13b. ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स के बीच का कंपैरिजन है और फाइनल कंक्लूजन है वो बताना है. अभी डायग्राम्स क्या है, व्हाट दे हैव टोल्ड इन द डायग्राम, सो लेट अस स्पीक अबाउट दैट फर्स्ट. ओके, 4.13a में इफ यू सी सिलेंडर, दिस इज द फर्स्ट सिलेंडर. इनिशियली सिस्टम है हमारी, एक सिलेंडर है, ठीक है, एंड इनसाइड द सिलेंडर द सिस्टम इज फील्ड. तो वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वी आई. ओके, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, दिस इज द स्टेट वन. इनिशियली ऐसा है, उसके बाद बर्नर से बाहर से सप्लाई करना है हीट. सो क्यू इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम सराउंडिंग. क्यू सप्लाई करना है. जैसे ही क्यू सप्लाई करेंगे द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइजेस, डेल्टा यू. यस, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइज हो रही है. सिस्टम क्यू सप्लाई कर रही है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम से कोई वर्क डन. अच्छा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज राइजिंग, तो अभी क्या कर रहा है, सिस्टम इज ऑल्सो डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन. सो पिस्टन इज शिफ्टेड एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड एंड द फाइनल वॉल्यूम इज वीएफ. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है. दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस. बर्नर सप्लाईज हीट, सिस्टम डज द वर्क ऑन द पिस्टन. बर्नर हीट सप्लाई कर रही है एंड सिस्टम भी वर्क कर रही है पिस्टन के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे गैस के अंदर क्या हो रही है, एक्सपांशन हो रही है. दिस इज अवर फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस में क्या है, देयर आर टू सिलेंडर्स, आई मीन देयर इज ओनली वन सिलेंडर, उसके ही बारे में बोला गया. इसके लिए डायग्राम दो बताए. पहले इनिशियली कोई बर्नर नहीं था, तो सिलेंडर के अंदर की जो गैस है उसकी वॉल्यूम है वी आई विच इज इनिशियल वॉल्यूम. ओके, पिस्टन की भी एक पोजीशन है. इसके बाद बर्नर से हीट सप्लाई करेंगे. ओके, तो जैसे ही हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम के अंदर की इंटरनल एनर्जी राइज होगी. इट अब्सॉर्ब्स द हीट एनर्जी फ्रॉम द बर्नर. एग्जैक्टली, अंदर की जो गैस है वो बर्नर से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है. अब्सॉर्ब करने के बाद गैस का क्या होगा, अंदर एक्सपांशन होगा. जैसे ही एक्सपांशन होगा तो it gives pressure on the piston and thus piston is also shifted and thus volume increases and VF is the final volume. Okay, मैंने सिर्फ आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके दे दिया. ठीक है, अच्छा, ओके. नाउ नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल.
तो अभी यहाँ पे देखो, अच्छा अभी आइसोथर्मली क्यों बोला है, तो व्हाई द वर्ड आइसोथर्मल इज यूज्ड, राइट। आइसोथर्मल तो तभी होता है व्हेन कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, बट इन्होंने यहाँ पे दे हैव गिवन एक्सप्लेनेशन कि इन द फर्स्ट केस, इन दिस केस गैस इज हीटेड स्लोली, गैस को हीट करना है वेरी स्लोली एंड इन अ कंट्रोल्ड मैनर सो दैट इट एक्सपांड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस, कि गैस का जो एक्सपांशन हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा एंड इट रीचेस द फाइनल वॉल्यूम वीएफ आइसोथर्मली। इसके लिए आइसोथर्मल वर्ड यूज किया है। आइसोथर्मल मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भले बाहर से बर्नर से हीट दे रहे हैं बट द गैस इज एक्सपांडिंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। द सिस्टम अब्सॉर्ब द फाइनाइट अमाउंट ऑफ द हीट ड्यूरिंग दिस, यस, सिस्टम थोड़ी सी हीट एनर्जी भी क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। ओके, नाउ सेकेंड डायग्राम, सेकेंड डायग्राम में क्या है, सडन अनकंट्रोल नो हीट इन, एग्जैक्टली सेकेंड डायग्राम में कोई बर्नर नहीं है, बट जो हमारा सैंपल ऑफ गैस है, कौन सा वाला सैंपल ऑफ गैस, ये वाला सेकेंड सिलेंडर का, यस, जिसके पास हीट एनर्जी भी है, वो ही गैस को फिल करना है इन दिस फर्स्ट। तो लेट मी लेबल हियर 1 and 2। हाँ, अभी ध्यान दो, ध्यान से सुनो कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल में वही गैस को सेम गैस जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, राइट, वापस से सिलेंडर में भरना है, बट नाउ द सिलेंडर इज केप्ट इनसाइड इन इंसुलेशन, बाहर पूरा उसको पैक कर दिया है, पूरा इट इज कवर्ड। तो बेस्ट एग्जांपल ले लो थर्मस का, ठीक है। अभी उसके अंदर गैस को फिल किया है, प्लस उसके अंदर भी पार्टीशन कर दिया है। ओके, तो से वही सैंपल ऑफ गैस जिसको हमने बर्नर से हीट दी हुई, हाँ, सेम सैंपल ऑफ गैस जो आइसोथर्मली जिसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया था, वही गैस के सैंपल को, ओके, अभी एक थर्मस के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो हीट बाहर नहीं जाएगी, पॉइंट नंबर 1। ऊपर से वो थर्मस के अंदर भी 2 पार्टीशन कर देंगे। ओके, तो जो नीचे वाला जो पार्टीशन है, एक्स पार्टीशन, उसमें ही वो गैस भरा हुआ है, ऊपर वाई पार्टीशन में वो गैस नहीं है और थर्मस पैक है, ऊपर से बंद है, ठीक है। तो यही हमारा जो सैंपल ऑफ गैस जिसने हीट अब्सॉर्ब की थी, उसको थर्मस के अंदर भी 2 पार्टीशन है, यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग, ओके, कि थर्मस के अंदर भी 2 पार्टीशन है, तो नीचे वाले पार्टीशन में गैस फिल कर दिया। अभी आप सोचो कि जो नीचे वाला जो पार्टीशन है, एक्स पार्टीशन, जिसमें जो गैस भरी हुई है, राइट, एग्जैक्टली, तो इन दैट इट हैज अ हीट एनर्जी, ओके, एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो लेस, right, because it was previously expanded due to isothermally expanded system है, heat energy was also given to that, so it has heat energy। अभी क्या होगा, you know, suddenly the partition breaks, partition जो है it will break, जैसे ही वो पार्टीशन ब्रेक होगा, तो जो गैस एक्स कंपार्टमेंट पे है, इट गोज टू वाई कंपार्टमेंट, ठीक है। तो गैस एक्स कंपार्टमेंट में से वाई कंपार्टमेंट में, मतलब इनिशियली वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम सिर्फ वी था, अभी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम देखो कितना सारा हो गया, सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हैज बीन एक्सपांडेड, अभी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वीएफ, right, because gas has that partition is broken, so gas moved from partition compartment x to y। तो पर आपने नोटिस किया, expansion of volume has taken place, but there is no loss of heat energy in the surrounding because पूरा system is inside the थर्मस, ओके। तो यहाँ पे देखो सडन अनकंट्रोल एक्सपांशन ऑफ गैस है, नो हीट, कोई हीट अंदर एंटर नहीं कर रही, इज वेल एज नो हीट इज गोइंग आउटसाइड। सो अगर ऐसी सिस्टम है जहां पे हीट एंटर नहीं कर रही और हीट बाहर भी नहीं जा रही है, बट स्टिल द वर्क इज डन, still the work is done, that kind of the system is, और ऐसा expansion को बोलेंगे free expansion, yes, it is called as free expansion। I will tell you where is that word। See the last line, such expansion, क्योंकि see in this case gas has not does any work during its expansion, एक्चुअल में गैस को कोई वर्क नहीं करना है, because it has not pushed any piston, यहाँ पे कोई पिस्टन तोड़ने की पिस्टन को पुश करने की जरूरत ही नहीं है, it has moved from one surface, it has just moved from compartment X
टू कंपार्टमेंट वाई। तो जो वैसा एक्सपांशन होगा जिसमें नहीं कोई हीट एंटर हो रही है एंड नीदर द हीट गोइंग आउटसाइड, सच एक्सपांशन इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। Such expansion is free expansion, very very important, where no q is entered in and no q has gone outside. There is no exchange of the heat with a system and surrounding. Yes, this is very important. Okay, there is no exchange of q with the system and the surrounding. So such expansion is called as free expansion. इसके लिए यहाँ पे इन्होंने थर्मस जैसा एग्जांपल दिया है कि पार्टीशन को ब्रेक कर दो, फिर वॉल्यूमिंग, मतलब है ऐसा ही। पहले ही फर्स्ट केस में भी देखो वॉल्यूम इनिशियल वी आई था, फिर वॉल्यूम हो गया वी एफ, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हम बाहर से अंदर, यस, और अंदर से बाहर भी एनर्जी जा रही है। पर यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं दे रहे, नो क्यू इज गिवन, तो नो क्यू इज गिवन एंड नो क्यू इज टेकन आउट, राइट? नो, बिकॉज इट इज इनसाइड द थर्मस। पूरा इंसुलेटिंग मटेरियल के मीडियम के अंदर है, पूरा सराउंडेड है इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके आई गिव द एग्जांपल ऑफ थर्मस। तो जब भी वैसा एक्सपांशन होगा अंदर अंदर के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। एंड कॉमन एग्जांपल दिया है एब्रप्ट पंचरिंग ऑफ इन्फ्लेटेड बलून और टायर। टायर का जो पंक्चर होता है दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपांशन। further we will read from here, but all of you, मैंने दो एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए। I have explained two example, okay? So all of you read in your textbook and understand कि क्या है ये examples, and then I will go further. All of you read and then message me, so I will go further. एंड फिर आपने क्यों ये लर्न किया वो भी बताती हूँ। क्या रीड हो गया सबका? Are you all done with the reading part? And what is the conclusion, that also we will see. Are you all done with the reading part? All of you message me. I'm waiting here. Okay, beta. Okay. Okay. So now see here. So in short, there are two examples. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो रही है, अच्छा व्हाट इज द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के लिए तो ऑल ऑफ यू सी हियर, फर्स्ट एग्जाम्पल में दे हैव शोन कि एक सिस्टम है विच इज ओपन, ठीक है,
एंड वही सिस्टम को अगर हीट एनर्जी दे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. इनिशियल वॉल्यूम था VI, अभी फाइनल वॉल्यूम है VF. ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहे हैं, आइसोथर्मली बोला है हमने, क्योंकि दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, सो वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग आइसोथर्मली. ओके ओके, विथ एन ऑब्जर्व वैल्यूज ऑल्सो. सेकेंड केस में सेम सैंपल ऑफ गैस को, जिसकी जो ये वाला सेकेंड सिलेंडर में जो सेकेंड स्टेज 2 में जो गैस दिखाया, सेम गैस को फिल किया है इन अ थर्मस. ठीक है, पर थर्मस के अंदर भी 2 कंपार्टमेंट करने हैं और उसको नीचे वाले एक्स कंपार्टमेंट के अंदर फिल किया है, सो यहाँ पे फिल की हुई है. ओके, यू ऑल कैन सी दैट. अच्छा, सो वॉल्यूम इज लेस एंड अभी क्या होगा, ये गैस का एक्सपांशन होगा, सो इट विल ब्रेक दिस फर्दर, से द पार्टीशन इज इन बिटवीन, जो देयर इज अ पार्टीशन, तो इनिशियल वॉल्यूम इज VI. अच्छा, अभी ये जो इनिशियल वॉल्यूम जो एक्स कंपार्टमेंट का है, इट इज सेम एज दिस वॉल्यूम. वो ही, दैट इज व्हाट, इस पे ही कंक्लूजन आएगा कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस आर सेम. कंपार्टमेंट पार्टीशन ब्रेक होगा, गैस एक्सपांड हो जाएगी एंड फाइनल वॉल्यूम होगा VF. गैस विल गो टू द Y compartment also and final volume is VF. Again final volume जो VF है, it is same as this volume, right? एंड टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है क्योंकि ये आइसोथर्मली एक्सपांशन हो रहा था, एंड टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है क्योंकि कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, कोई हीट अंदर भी नहीं जा रही है. So finally, thus what we have learned, final conclusion is कि yes, कि change of volume of the system, two different system, from initial to final, changes were same, even isothermally in both the case, only the path were different, कि first का path different है and second diagram or the second example का path is different. तो मेन ये है कि बेसिकली यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स इज दैट, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अलोंग विच पाथ द प्रोसेस हैज टेकन प्लेस, राइट? फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम्स आर सेम, फाइनल वॉल्यूम आर ऑल्सो सेम, बट फर्स्ट केस इट इज ओपन सिस्टम, सेकेंड केस पूरा थर्मस के अंदर है सिस्टम, राइट? तो उनको हीट एंटर भी नहीं हो रही, हीट बाहर भी नहीं जा रही है, जो हीट है वो उतनी अंदर के अंदर ही है, सो टेम्परेचर मींस कांस्टेंट. फर्स्ट केस में कांस्टेंट टेम्परेचर से सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई की है, सो इट इज आइसोथर्मल सिस्टम. इसमें भी वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है, राइट? सो दोनों, बोथ आर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, बट दोनों में सेम थिंग इज हैपनिंग, सेम, बट द पाथ आर डिफरेंट. यस, so that is what you have to learn कि दोनों केस में इनिशियल वॉल्यूम सेम है, फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है पाथ. सेकेंड केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है सिस्टम से, राइट? नहीं हीट अंदर जा रही है, नहीं हीट बाहर जा रही है, ओके, बट स्टिल दोनों के केस में इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम्स आर सेम. सो रीड दिस, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज गिवन ऑन दिस पेज. Yes, you all have to read these 2 paragraphs. Experimentally, it has been observed. There is, this is important point, कि when the gas goes under a free expansion, there is no change of temperature. Free expansion हो रहा है तभी कोई change in temperature नहीं होती है. वैसे भी here तो it is thermos के inside है, तो we will say कि no change in temperature. Only यहाँ पे difference क्या है? The intermediate states and the path. Yes. So दो चीजें हैं जो यहाँ पे different है, the states and the path. See, it means we have 2 different paths connecting the same initial and final states of system. So this is basically the main conclusion. To heat transfer to a system also depends on path. कि whatever heat is transferred to a system always depends on path.
So everyone understood this. Just tell me. आपको ये आंसर में you just have to explain the two examples and conclusion. That's it. कि सिस्टम के स्टेट्स तो सेम ही है बिफोर एंड ऑफ द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस. Everyone understood? So I will go for the next answer. This can come as a full-fledged 3 marks question. हाँ 3 marks question के लिए आ सकता है. Yes. This can come as a 3 marks question. Yes. अभी क्वेश्चन कैसे आएगा? How, what are the chances of getting, or which kind of the questions you can expect from this topic? So heat added during a thermodynamics process, right? So heat added during a thermodynamic process undergoes it goes through the different path. Explain in brief. Yes. Ki whenever the heat is added during a thermodynamic processes, it can have a different path. Okay. So this explain in brief that how it can have a different path. तो आपको सिर्फ 2 example, 2 diagrams and 2 examples. Explain in short, right? First, for case 1, see, in short, I will tell you how to write answer. First, case 1. Let us take a sample of gas filled in the cylinder. Okay, and the initial volume of the sample of the system is Vi. Okay, say some heat is supplied to the system with the help of a burner. जैसे ही हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम अब्सॉर्ब्स द हीट एनर्जी एंड स्लोली system volume of the system is increasing, but the system is absorbing the heat energy at a constant temperature. So this is said as an isothermal work is done on the system. कि isothermally system is expanding its volume at a constant temperature. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया. तो इनिशियल स्टेट क्या था सिस्टम का कि वॉल्यूम कम थी सिस्टम की. फाइनल स्टेट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हैज बीन इंक्रीज्ड. सिस्टम की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. नाउ सेकेंड एग्जांपल में लेट अस टेक अ सेम सिलेंडर, पुट इट इनसाइड द थर्मस. ओके, अच्छा, अभी सेम सिलेंडर पुट इट इनसाइड द थर्मस, वही सिस्टम जिसने हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब की हुई है वैसी वाली, पर नाउ उस थर्मस के भी 2 पार्टीशन करने हैं. सो 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ द थर्मस cylinder has been made. There is no piston. Let us take a container and the system is filled in it with the 2 partition and the container is put it inside the insulating medium. पूरा कवर करना है insulating medium से. The system is in the compartment X having temperature same as the फर्स्ट सिस्टम. हाँ, जो सेकेंड बर्नर से जो सप्लाई किया है वही टेम्परेचर में. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, पार्टीशन. इनिशियल वॉल्यूम वही है जो हमारा फर्स्ट केस में था. पार्टीशन ब्रेक करो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. फाइनल वॉल्यूम भी वही है जो हमने फर्स्ट केस में फाइनल वॉल्यूम लेके आया था. सो इनिशियल एंड द फाइनल वॉल्यूम इन बोथ द केसेस आर ऑफ द सिस्टम आर सेम, बट द पाथ वर डिफरेंट. तरीका अलग अलग है. Okay, so this can come as a full-fledged 3 marks question. How the heat transfer to a system depends on the path. Explain in brief. जिसको मैंने स्टार किया हुआ है. So when I will give you in writing, it will be much lesser and shorter. अभी classification of thermodynamics processes. Okay, तो चलो, very interesting answers now from here. ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस में क्या बोला है कि देयर आर मेनी वेरिएबल्स, राइट? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ द दीज आर द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम. अभी टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम विथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ठीक है, सो वी विल बेसिकली फोकस ऑन दिस 3 वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. पर ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई भी 2 वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं तो थर्ड शुड बी केप्ट कांस्टेंट फॉर द ईज ऑफ द स्टडी. तो अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर रहे हो तो टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, देन लेट अस स्टडी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम.
volume versus temperature, then let us study for a constant pressure. The one variable should be kept constant. Okay, right. So then only thermodynamically the other two changes can be learned easily. See here, but in practice, actual mein, in practice means actually for the sake of measurement, any one of the state variable is held constant always. Practically, one variable is kept constant and two are varied. It is useful for us to classify the processes. Okay. So this can be a 2 marks or a 3 marks questions. Which are the different thermodynamics processes? 1 mark question. Which are the different thermodynamics processes? Reversible and irreversible. ये हमें भी मालूम है कि there are few examples जो रिवर्सिबल है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स आर रिवर्सिबल, फ्यू एग्जांपल जिसमें इरिवर्सिबल. जैसे कि लेट मी गिव यू बेस्ट एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस. सो चलो अगर सपोज हमने मेल्टिंग ऑफ आइस पूरा लर्न किया एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, आपका आइस क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द फ्रीजर एंड इज placed on a and it is placed on a dish, right, and it is kept on the table. After some time the heat energy goes to the surrounding, ice melts and it gets converted into the liquid, right? Okay, then what? Then the same liquid is again put back into the same cube tray, and if it is put in the freezer, it gets converted into ice back. So ये हो गया reversible. Reverse हो सकती है action. But there are some thermodynamics process which are irreversible, right? Irreversible. Okay, जैसे कि best example they have given rubbing of a palm. When the two palms are rubbed very hard, very hard, right, a lot of energy is created. Work is done by the system, and therefore the energy is created and that goes to the surrounding. But this is irreversible, right? If we keep our palm like this, तो वापस surrounding से energy आके वापस body में नहीं जाने वाली है. Okay? तो बॉडी की जो एनर्जी स्पेंड हो गई वो गई, वापस बॉडी में अगर एनर्जी लानी है तो वी नीड टू ईट फूड, एंड फूड देन गिव्स अस एनर्जी सो दैट वी विल बी एबल टू डू वर्क डन, राइट? तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल समझ में आए सबको? सबको समझ में आया? मैंने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का एक एक एग्जांपल दे दिए. एवरीवन अंडरस्टूड? रिवर्सिबल कौन सा होता है, इरिवर्सिबल क्या होती है? Everyone understood? Just message me. For irreversible, I gave the example of ice cube. पूरा मैंने आपको बोल के बताया. Ice cube kept on a dish, then placed on the table. फिर उसका it gets converted into water, right? This is irreversible. वापिस वही water को आप फ्रिज में रख दो, फ्रीजर के अंदर, वो ice बन जाएगी, right? So it is thermodynamic process है, irreversible. Sorry, reversible है. एंड इरिवर्सिबल कौन सी है? जो नहीं हो सकती है वापस कन्वर्ट बैक. रबिंग ऑफ पाम, पाम को रब किया तो एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द सराउंडिंग, पर वापस पाम ऐसे रखने से सराउंडिंग से एनर्जी नहीं मिलेगी हमें. एग्जैक्टली, we will not get back energy from surrounding. For that we need to eat food and thus food gives us energy. Okay, so that is irreversible. Everyone understood reversible and irreversible? Chalo, tell me that. They have given many examples here. Best examples they have given here. Puncturing of a balloon, inflated balloon. Puncturing of an inflated balloon. Inflated balloon है, उसको puncture कर दो, फोड़ दो इसको. Once the balloon is prick, it gets just convert into a rubber sheet of rubber, broken rubber sheet. Can we convert back that broken rubber sheet into a balloon back? Chalo, answer my question. I got message, let me read it. क्या वापस से वो शीट ऑफ अ रबर से कैन वी गिव बैक द सेम शेप, सेम वॉल्यूम, सेम साइज? नो, अजिंक्य. एग्जैक्टली. तो इट इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल. I got message. No, okay.
एग्जैक्टली तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, irreversible, very good. Other example is given burning of a candle. Burning of a candle, when the candle burns, it gives energy, lot of energy to surrounding. क्या वापिस से सराउंडिंग में ऐसे रखने से कैंडल टेक्स इट्स हाइट ऑन इट्स ओन, on its own? No, no. So burning of candle is the example of irreversible. Yes, burning of candle is the example of irreversible thermodynamic processes. Okay. So there are melting, और ये देखो यहाँ पे few examples दिए हुए हैं रिवर्सिबल के, melting of ice, freezing of water, boiling of water, condensation of steam, ये सारे रिवर्सिबल के examples हैं. Okay. कि रिवर्सिबल कौन सा होता है, इरिवर्सिबल कौन से होते हैं, एंड हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल. दिस इज द डेफिनेशन कि ऐसी प्रोसेस विच डू नॉट रिस्टोर द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जैसा सिस्टम था वैसे वापस नहीं हो सकती है, दैट इज irreversible. These are the familiar examples of irreversible thermodynamic process. And reversible, that means the initial state of the system can be restored back. Yes, ice cube को melt कर दिया तो वापिस ice cube भी कर सकते हैं. तो वैसी जो thermodynamics process है, some familiar example of thermodynamics process are reversible. So just change in thermodynamics process can be reversible change or it can be irreversible changes. Everyone understood? You can expect 2 marks or a 3 marks question based on this. Which are the reversible and irreversible thermodynamics processes? Define reversible thermodynamic process with example. Define irreversible thermodynamics process with examples. Okay. So जिसमें initial state of the system वापस से ले जाए हो जाएगा तो that is called as reversible. And again अगर initial state of the system we cannot go back to the initial state of the system, that is irreversible. एक बार कैंडल बंद हो गए तो वापस कैंडल नहीं कर सकते खुद से, we cannot make a candle by its own. ठीक है, the same to same candle. Okay, so that is irreversible. And then graph. रिवर्सिबल का ग्राफ देखो, look at the graph of reversible processes, thermodynamic process. In that you can see 2 arrows, right? So अगर changes ऐसे हुए हैं तो it can be reversed back also. Okay. PV graph traced with the opposite direction, reverse in opposite direction also. The path of reversible thermodynamic process is the same in the forward and reverse direction. कि path is also same, along the same path उसको reverse back कर सकते हैं. अगर सेम पाथ पे चेंजेस हुआ है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस एंड द सिस्टम इज बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर इट इज टेकिंग अलोंग द रिवर्स पाथ. यस, सो दिस इज अबाउट द ग्राफ. रिवर्सिबल का ग्राफ है तो सेम पाथ, दो ही एरो बता, डायरेक्टली दोनों एक ही पाथ में 2 एरो बता दिए हैं, राइट? आइस को मेल्ट किया तो वो भी यही पाथ से होगा और आइस को फ्रीज किया तो भी वापस सेम पाथ से ही बैक जाना है. ओके, so this is the graph P, graph of reversible process. So everyone understood till here? So let me ask question. All of you are seeing figure 4.14, ठीक है? But you all tell me actual में कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा है कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एट ऑल. चलो टेल मी, एक्चुअल में ऐसा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस भी वही पाथ से सेम टू सेम बैक
इनिशियल स्टेट पहुंच जाएगा. देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एट ऑल. ऐसा होगा कभी एक्चुअल में? जस्ट थिंक एंड टेल मी. ऑल ऑफ यू थिंक एंड टेल मी. Is it possible कि there is no loss of heat? There is no loss of heat at all and actual में वही path से reverse back हो गया. Is it possible? There is always some loss of actual thermodynamics में हमेशा there is some change of loss of heat होगा ही होगा. Yes. Exactly. Let us take the best example of ice cube. जब ये ice cube को when we will put it in the plate and when it is kept in the surrounding, right? When it is kept in the surrounding, okay. So there is some transmission of heat from surrounding to ice cube, okay, and ice to the surrounding. So there is some loss of heat energy. See here. So a real thermodynamics process may there will be always some loss due to friction or some other dissipative force. Actual में there is always some loss of heat due to friction and some other dissipative forces. अभी ये वाला जो ग्राफ है, this is the PV diagram of irreversible process. Yes, irreversible. कि ये देखो A to B change in volume हो गया, final to initial to final, but final to initial जाएगी तो वही path से नहीं होगा. It will be not along the same path. Yes, final to initial जा सकते हैं, but the path is different. So irreversible process. This is the graph of irreversible process where they have shown straight line. अगर back जाना है एंड इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए कर्व पाथ बताया. मतलब अगर फाइनल से इनिशियल जाना है, राइट, तो वी कैन गो बैक. यस, वी कैन गो बैक एंड सम ऑफ द केसेस इनिशियल पहुंच भी जाएंगे, बट नॉट सेम टू सेम. Okay, so this is irreversible process graph, PV diagram of irreversible process. सारे graph के ऊपर you can get MCQ questions. PV diagram of reversible, PV diagram of irreversible. ऊपर के answers में भी we have seen many graphs, right? For example, previous answer, yes, all these are also different path. Volume change at constant pressure, then pressure change at constant volume. Graph of pressure and volume both changes, right? और यहाँ पे first pressure drops at constant volume and then volume increases at constant pressure. Based on the graph की, there are so many graphical MCQs questions. Graph read करने आना चाहिए अच्छे से. So see here, irreversible process is that which cannot be retraced in reverse direction. The path of the irreversible thermodynamics is not the same in the forward and reverse direction. Yes, so this is important. There is always some permanent loss of energy. Yes, there is always some permanent loss of energy. So now we will continue in the next lecture. It is almost 8:45. Whose lecture you have next one? Whose lecture is the next lecture? I got message. Okay. So all of you can just go take a break of 5 minutes if you wish, right? Go and freshen up, have water, drink water, okay, have tea, whatever. I will give you break of 5 minutes and by the time ma'am will also start her lecture. Okay. So bye bye all of you. Next time I will prepare question answers, few question answers, and we will discuss in a same way we will discuss our theory. I guess now very soon we will finish with this chapter. We are about to finish this chapter, few more days.
Bye. Bye, beta. Bye bye, all of you. Bye, beta. Bye. Anjali?